All right, welcome back, viewers. This is our episode number 64, and today we have a very special guest with us. His name is Aakarshan. Aakarshan, first of all, I am so glad that you have joined us on this episode, and it is really exciting to be here with you and talking a lot more about startups. So, to give you an introduction, our audience, Aakarshan has been a startup mentor for a decade and more, and his journey has been continuing in this field. So he has worked with the big giants, he has worked with startups, and he has personally run his own businesses. And the best part for our audience who is from Uttarakhand, who is from Himachal, he is a startup mentor registered with the Startup Uttarakhand and Startup Himachal as well, and many more other places. He works with TAI and a lot more. And when I was having a conversation with Akarshan, the best part was that he told me, I only see Anmol, I work with only early stage startup. My goal is not to tell you how to make a unicorn, but I will tell you how to reach to 30 lakh, which is for a startup is most important thing because that's where maximum startups fails. And as per the statistics, Akarshan told me 200 startup gets registered in a day, out of which 190 fails. So this is something that Akarshan is working on. Enough of introduction from my end, Akarshan. First of all, welcome to this episode. We would like to hear a bit from you about a bit about your journey before we deep dive into the the segments we have built for the episode. So why not Sure. you take it? Thank you so much, Anmol, for this warm introduction. And I must say, the Young Turk Dialogues are doing incredible job. Kudos to you and your team. It's like I have seen the previous episodes, and it's so good. Like people learn a lot about it. I have like seen the comments, seen the people who are actually, in like you are encouraging a lot of youth people specifically. So kudos to you and your team. Great Thank job you so on much. building That this that means a wonderful. lot actually. This motivates us to push more episodes for the specific region that I am in, which is Dehradun, and lacks a lot of things in the startup ecosystem. No, this is actually great. Just a quick, background about myself to all the viewers, listeners. I've been part of the ecosystem for quite some time, and I won't say that you will, like I have done a lot or I've achieved a lot. I'm learning every day about the startup ecosystem, about how to build a great startup, about how to solve problems at the grassroots level. Yes, I have like tasted the water from every boat, I would say. Whether you talk about, like working with the incubators, working with the governments, working on the state startup policies, working directly with the VCs or the venture or proper investors, angel investors, and everyone. I have worked with directly with the big corporates. I am currently also working with a Series A funded startup. So I have like actually gone through each and everything. And all I can say is if you have passion about entrepreneurship, it's not necessarily that you have to start your own venture. You can be part of the ecosystem, learn every day, and once there will be a right time, maybe 5 years, 10 years, 20 years down the line, you can start your own startup. Right? It's important to learn from the experiences the entrepreneurs are going through, whether they are, I would never say that entrepreneurs fail, they learn. Okay, so that's the most important thing. And you just need to like enjoy your passion, and your passion can be anything. So that's like very important stuff. You want to go for jobs, you want to create jobs, right? You want to do some kind of work in the NGO, you want to give it back to the system or the ecosystem where you're coming from. It's your call, but just find your passion, just find your interest. I'm sure like there will be a time when things will fall into the picture, not today, not tomorrow, but definitely 2 days, 3 days, 2 years, 3 years down the line, you will get that particular reach where you have to reach, like particular destination, you will get it. So yeah. Right. And and in addition to what you just said, is that most people I see they don't have that amount of patience that they keep on working for a thing after 6 months. Once that honeymoon period or that excitement is gone, they just leave it. That is what is happening in market. I also see with many of my friends. They will say, "Oh, brother, I got this really crazy idea. I will do this, that." They will work on 6 months. Now I think it is not exciting me anymore, so I will move ahead with next. So Absolutely, Anmol. Absolutely. See, the problem with whether you call millennials, whether you call with Gen Zs, the one thing is that we all coming from this particular age, in this fast generation age,
We want everything to happen quickly. We don't have Correct. patience like our parents or our grandparents. They're pretty much calm. We are not calm. We want everything, to be We done want quickly. everything to happen just like that. Absolutely. If we want to, like become, if we think that, okay, we want to become a millionaire, we want to become an overnight millionaire. And because of that, we do a lot of mistakes, right? We indulge in a lot of negative activities. And that's like probably one of the bad things which people are going through. So, yeah, like my advice is be patient. Rome was not built in a day. Keep Correct. hustling, keep working hard. You will reach your destinations. If you talk about the cricketers, you talk about the actors, you talk about anything, you talk about politics, these three are the major things in India, right? If you Right. look at their journeys, it's not that they have become an overnight millionaire, or they have got that overnight recognition that they are superstars in their particular field. No, they have been hustling for last 20, 30 years, right? And I think Just Yeah, entrepreneurship is close to that. If you see how absolutely, the journey of, let's take example of Virat Kohli. So absolutely, where he started and now where he is, I think there is 2 decades of hard work that he has done to reach where he is right now. absolutely. I'll just give one more example in this. Like one of the favorite singers of like this generation, Diljit Dosanjh. Yes. Just look at his journey, man. Yeah. Correct. He's not singing songs for like last 5, 10 years. He have been there in the system for last 20, 25 years. And Correct. just look at his journey from where he has come to where he has now reached. It's a big thing, right? And that's what it's very important, right? Just be patient enough, keep working hard. Person will reach its destination. Don't leave your passion, don't leave that interest, right? It's my request to everyone out there, right? If you like something, work hard on it. It's okay. I understand, sometimes there is financial problem, sometimes there is like family pressure, society pressure. Keep doing your jobs now. Who's stopping you to not doing your particular job? Keep doing your Correct. jobs, but you will do your job for 8 hours, 10 hours, 12 hours. You will still have 12 hours remaining. What are you doing in those 12 hours? That's important. Get 6 to 8 hours of sleep, it's okay, but you still have 4 to 5 hours, right? Why do you Correct. want to become a lazy ass and just be on your couch? Like, okay, I understand you want to watch movies, you want to have a free mind. It's okay. Give 1 hour to your passion every day. That's it. Just give your 1 hour, and that's about it. I'm not asking anything else, right? Just keep giving 1 hour, and see, you have given 365 hours in like 1 year, right? And that 365 hours will actually lead up to your passion in the best possible manner. You will get the desired results. So that's like very Correct. important. Take baby steps, and you'll reach for sure. Makes a lot of sense. So now connecting this with the startup ecosystem in India, Akarshan, like you and I, we had a good chat about it. So Yeah, in startup ecosystem in India, every day things are happening. Funding winter is going for some people. Some people are still able to make out. Zepto is, I think Zepto recently back again 350 million funding. So yeah, a lot of things are going in our ecosystem on the top level as well as on the bottom level. If I talk about not I will say bottom level, but state level, city level, a lot of things are happening. Ecosystems are growing. So what's your take on this? You have been associated for more than a decade into the system, yeah, and specifically with the tier 2 cities now, we want to take out a little bit of pressure from our yeah, tier 1 cities, bring that to tier 2 cities, or even develop. So I was yeah. reading the case study. So in Maharashtra, Mumbai is developed, Correct. right? But I saw that there are many states which are living above cities that are above, sorry, below poverty line. So Yeah, there was this case study I was reading, and now yep, they are planning to develop all those regions. And same thing is happening, I think, everywhere else, right? absolutely, If I'm not wrong. So absolutely. what about that? Yeah, We would like to know your thoughts on this, as you have been mentoring a lot of these places and these yeah. people. So, I am not going to give any facts or any figures, just randomly. I'm taking government figures. Will be giving, proper, sources as well where it's coming from, and it is actual. Okay, it's not that government is lying somewhere, right? It is actual figures. So, DPIIT, okay, recognized startups, which is like under Startup India program.
the startups which are being recognized by the government of India. Okay, there are more than 150,000, means 150,000 uh, companies who have been registered by or recognized by DPIIT, which is Government of Okay. India's program. Okay. Now, if you talk about this, Startup India scheme was launched on January 16, 2016. It's been almost like what, 8, 9 years probably now. In Correct. 2025, we are almost close to that. Now, in last 8 to 9 years, if you just look at these startups have scaled. And I would like to give credit to the government of India, right? There are programs like Startup India, Digital India, Invest India, right? There are so many programs which are running. But the only problem is we, as again, in this generation, or probably we talk about any generation who are lazy, right? We are just sitting in front of our systems and abusing the government. Why? Why don't you just search what is Startup India scheme? We all would have heard somewhere or the other, but have we actually searched about it? We all would have heard about Invest India. Have we searched about what is that? Right? Are we taking any kind of benefit from the governments? We all say, government is corrupt, this government is corrupt, this government is corrupt. But aren't you corrupt as well? Correct. Right? It is very easy to point Pinpoint fingers, fingers. Yeah, but absolutely. there is no Absolutely. self-realization. What am I actually doing with myself? Absolutely. Even I am Absolutely. putting in efforts to see. Absolutely. And And this is I so true. How many people see Startup India as just a certification that they can showcase on their website. They don't actually know. They haven't gone through the time and taken the time to read the policies what government is offering. And absolutely. that's where I think most people like, because government has opened their gem portal. You can go for Yeah, tenders. Any startup can go for it. Even I have absolutely. registered myself. I work Yeah. on it. And then there are scheme for startups. Government is giving fundings, grants are there, and then Lot of things. also mentorship is there on Startup India. And then one more thing I really liked is, which you and I also discussed, that I'm going to apply for that income tax rebate. So government Yeah, is giving you 3 years of tax rebate. You don't have correct. to pay taxes. You apply for it. If you are below, I think 2.5 cr, then they give you Yeah, the rebate. yep, So yep. it is a Absolutely, massive thing. 3 years you don't pay taxes. You rather invest that money back into a company. absolutely. And in fact, like coming to that, so Startup India basically, like I think so, 6, 7 years back, when they, after they launched policy, after 2 years of their launching policy, they launched one scheme or one award, to be precise. It is called as State Startup Rankings. Now, what Yes. is that state startup rankings? It's basically they rank the states in a way like it's an award, right? That okay, it's the most innovative states, it's the best state, something on those lines, right? Now, very much, this is like very important for us to understand. So specifically to the Uttarakhand people, or I would say Himachal people, the hilly areas, because we consider that as tier 2, tier 3 cities. And a lot of people say that it's, everyone would ask, like, okay, Anmol, before jumping on that, I have one question for you. According to you, which is the most innovative state in the country? Like, Bangalore, Delhi, Mumbai, these yeah, are the like, states that come yeah, to my mind. these are the states or probably the cities which you have talked about. Yes. So we when we hear the innovation, when we hear the Silicon Valley, Bangalore or Karnataka probably comes into the list, Maharashtra comes into the list, Delhi comes into the list. But what if I tell you, in 2018-19, I did a like one of the biggest project of government of India at the ground level, which was called as Startup India Yatra. So our role was to spread awareness about entrepreneurship, scout the best of these startups, right, from tier 2, tier 3 cities, to take them to the like biggest cities, do a competition, see who are the winners, or like which region is doing the best, and so on and so forth. So I personally covered more than 10 states. Like I went Okay. from north to central to northeast, and so on and so forth. Now, trust me when I say this, that time Jammu Kashmir was more of a state. Okay, Yes. I went to Jammu and Kashmir, right? I stayed there for almost a month. And I'll be glad to tell you that when I went and heard the answers, or probably the innovative startups, I was, like I was surprised that okay, these startups are there in these regions. Like
Trust me when I say this, there was one guy who built a Stephen Hawking chair, okay, which was running on command in three different languages: Hindi, English, and Urdu, and it was done by one of the entrepreneurs in Srinagar. Can you Wow. just think about it? And because a lot of challenges are there in Srinagar, or probably, if I just talk about Uttarakhand or Himachal, right, there are so many innovative, like ideas which are being run or implemented by the local people out there. It's just that it's not in the media. It's just Yeah, that they there are is no not awareness the unicorns. about Yeah, right. because they're not promoting that. The important thing is that they should know how to promote themselves. It's called like basic marketing. If they know Yes, how to do basic marketing, they're probably the best of the best innovative minds in the country. So it's really important that the startups, or probably the companies, or the innovative solutions which have been locally implemented, should come out in the media, or should come out in the picture, and they should tell that, okay, how we are solving the local problem, right? correct. Again, we Which have. is right now not happening Yeah, that much. absolutely. We have all Right. heard about Sonam Wangchuk, right? And Yes. Yeah. Sonam Wangchuk, we call him as one of the best innovators in the country, right? And after Three Idiots only, we heard more about him. Before Three Idiots, it was not somewhere, it was not that, like a face, recognized face, right? But when I particularly went to Leh Ladakh, there was, like, we have heard there was a problem of, water, but he made a glacier out of which he, created a, very purified water, and he solved that water scarcity problem over there. Now, see, these are the small, small solutions implemented by the local people over there. And every tier two, tier three cities has some kind of an issue, and it is being solved by the local people. It's just Correct. that those solutions are very much important to be recognized in the media, or they should do the marketing, and get like themselves as like one of the best solutions either in the country or international as well, right? So it's very much important that you make good business out of what solution you have implemented. So tier 2, tier 3 cities, probably, according to me, according to my experience, have more beautiful, innovative minds than the tier 1 cities, but it's just that we are Then not again, they are not recognizing. marketed well, so nobody knows Yeah, about them. yeah, absolutely, absolutely. And again, coming to, like, let's say I'm coming to Uttarakhand as an example, right? Now, Startup Uttarakhand is, so it's basically a state startup policy run by government of Uttarakhand. Okay. Now, to tell the local viewers, Uttarakhand is giving so many benefits to its startups. Like, just giving you an example, okay? There are so many monthly benefits which is being given by a registered, which is given to a registered startup by Startup Uttarakhand. Like, for example, co working space subsidy, tax exemptions, training programs, seed funding, right? Like, proper, a lot of things have been given to the women rural entrepreneurial support, right? uh, Lakpati Yojana also they yeah, have a lot, but people are not applying. I understand that there can be, out of 50 people who have applied, maybe for 2 3 people there would be, some challenges, that they might have the best solutions but they have been not recognized or something or the other. There are always been exception cases, but yes, the most important thing is that, are you actually applying for it? If you are a registered startup in by Startup Uttarakhand, you will get 15,000 rupees every month till 12 months, right, to run your startup. And at the earliest stage, 15,000 makes a difference, yes, right? it makes You a can difference. make a lot of things out of 15,000. You just do marketing of 5,000 per month, you'll get good followers, like probably good organic marketing, you'll get a lot of good things, right? So that's probably, I would say, you know people are lacking the knowledge or lacking the implementation, right? So probably if they start looking at the policies which is run by the government, and they implement it for their startups, they are going to become a great startup. It's just, about the awareness, just be aware what's there. And वो कहते हैं ना, इंडिया में हमारा दिमाग जो है बहुत जुगाड़ू है, राइट? इट्स Yes, इट्स वेरी जुगाड़ू, राइट? अपना दिमाग चलाओ,
जुगाड़ चलाओ, network out with people, even if you don't have the innovative solution, if it's just a basic, very basic solution, right? And to be honest, basic solutions are the best businesses, okay, because Yes, it's going to this reach the way, we B2Cs. discussed. We discussed. Yeah. I Yeah, was coming to that. So Akarshan told me that you can have. So with colleges, you yeah, only start. So with colleges. Akarshan, your yeah, sorry, camera. sorry. Yeah, Yeah. So yeah. So with colleges, Akarshan was telling me. So and I will ask you the same question, our audience. We'll put it here as well. yeah. How many patents your college has? Comment it down in the comment section. We will talk about it. I'm giving you 5 seconds. One, two, three, four, five. Okay. Generally, a college has more than 5,000 patents. That day, me and Akarshan were discussing about this. Even from the university that I come, they do a lot of celebration whenever a patent is registered. But the question is that how many of those patents are actual businesses? Yeah, So innovation is this level, but actual execution is this level. true. There is a this gap. Why is this gap happening? Because they are not actually executing it. And from that, I want to talk, Akarshan, I want you to talk about why starting early is necessary. One thing, because so I am also a recognized mentor by Government of Delhi's, which is the Business Blasters program, and I am mentoring the startups who are actually at the school level. Okay, Yes. like they are at seventh, eighth, ninth, 10th standard people. Um, I This is very important that the government, again I would say the government or the CBSEs or the ICSEs, the education board, if we are adopting a lot of policies from the western side, one thing which we should implement, that is how to create a business mindset at the earliest level, right, in the kids. What we lacked as kids is that we never knew that okay, there is a terminology named as business. If we are coming from a like mindset of, like, let's say our family, they have been in the job professionals, we probably would never know about okay, there is a business. We just know that okay, there is a task which is being given, we just have to do that. And like that's what, till 12th standard it's being implemented. Okay, you need to get a good score, 90%, and that's about it. Does it make a difference in your career? No. Today, no No. one asked me what was my percentage in 10th or 12th. No one asked me. No, Anmol, nobody, even when we hire, so we don't even check the resumes now. yeah, The times yeah, have changed. We actually are interested what the person actually knows and can deliver the value or not. absolutely, And that's how absolutely, startups are functioning these days. absolutely. So And you meet somebody through reference, you have a coffee with them. Okay, you are hired. Okay, I yeah, think this won't work out. absolutely. So And it's a very wrong mentality that people say okay, you like I still say that okay, there is an advantage that if you are an IIT or IM or ISB alumni, or probably a pass out from that college, okay, that's understandable, because they have, again, no jealousy from those people, because they have done their hard work. Yeah, yes, they deserve that recognition, right? So it's okay, right? But again, it's not something that okay, where the IITs or the ISB people have reached, you can't reach there. You can reach there. Oyo's founder Ritesh Agarwal, he's just a dropout, man. And see yes, where he is. He's one of the best entrepreneurs of the country, better than the most of the others, right? correct. So it's very important for us to understand that wherever we are coming from, right, if we start doing business at the earliest, it's a very small thing. Even if you are in a 6th 7th 8th standard, right, apne aspas, like, this is something, a suggestion to all these 6 to 12 students specifically, राइट. हम लोग सिक्स्थ में आके पेन्स बेचना, लेना, खरीदना शुरू कर देते हैं, और पेन से वर्क करना शुरू कर देते हैं, फ्रॉम पेंसिल टू पेन, राइट. देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी एंड इट्स अ वेरी बिग जर्नी. बट कैन यू डू वन थिंग? कैन यू जस्ट इम्प्रेस योर 40-50 स्टूडेंट्स का जो बैच है, उनको बोलो यार मैं एक ये पेन डिस्कवर करके लाया हूं, तुम मेरे से पेन लो. उन लोगों ने, आपके साथ के फेलो स्टूडेंट्स ने पेन लेने ही है, राइट. क्या आप अपने किसी लोकल शॉप से वो ₹2 का पेन लाके, वो ₹5 का बना के, कुछ भी इनोवेशन, एक डिजाइन बना के, क्या आप आगे बेच सकते हो? And that's how the business mindset will create. And this is specifically to 6 to 12th people. This is specifically a suggestion to all the parents of these people.
राइट? क्या आप लोग ये स्टार्ट करो, एंड यही से जर्नी स्टार्ट हो जाती है माइंडसेट की, बिजनेस की, राइट? आप लोग एक ऐसे मैगजीन प्रिंट कराते हो, आप लोग कैसे चीजें बेचना शुरू करते हो, लाइक दिस इज हाउ द बिजनेस माइंडसेट विल गेट इम्प्लीमेंटेड इन दीज किड्स। आई एम नॉट सेइंग कि उनकी पढ़ाई छोड़ दो और उनको बिजनेस में लगा दो, नो, आई एम सेइंग उनको बिजनेस माइंडसेट क्रिएट करवा दो। दैट्स मेक्स लाइक सेंस। वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो अगर ये चीज सी स्टार्टिंग अबाउट से हो जो जाए ना, हमारे अग्रवाल्स ऑफ द वर्ल्ड है या इन तरीके की या फैमिलीज है, तो उसमें बचपन से ही बच्चों को ये सारी चीजें मिलती हैं। सो दे आर एब्सोल्युटली, ऑलवेज लेवल्स अहेड। उनको पता रहता है, हाँ, मैंने घर में ऐसे बात होते हुए देखी है। या तो दोस कन्वर्सेशंस नीड टू हैपन इन एवरी हाउसहोल्ड, अगर हम इंडिया को every household, and you will see a difference. We are already, one of the best. Like why इंडिया में आप कभी भी देख लो, कभी भी पिछले 30 years में उठा लो, इंडिया में कभी ऐसा कोई रिसेशन नहीं आया है। इफ पीपल टॉक अबाउट कि कोविड में प्रॉब्लम्स हो गई थी, अ लॉट ऑफ पीपल फेस्ड प्रॉब्लम्स इन कोविड टाइम्स, और पीपल फेस्ड वो जब 2008 2009 में यूएस में इतना तगड़ा रिसेशन आया था। इंडिया में कभी कोई रिसेशन नहीं होता, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, जुगाड़ हो जाते हैं। ठीक है, एक बिजनेस बंद होगा, दूसरा बिजनेस बहुत चल पड़ेगा यार। 2020 टू 2022 जब कोविड इतना टफ पीक पे था, राइट? आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ बिजनेसमैन सफर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ बिजनेस वर इम्पैक्टेड। बट अगर उसी का हम लोग देखें दूसरे साइड में, एडुकेशन बिजनेस, हेल्थ केयर बिजनेस, वो कितना बूम पे था, कितना बूम पे था। आई थिंक सो I'll talk about one of these other successful startups जो कि आजकल problems face कर रहे हैं, but still I would still appreciate them. बायजूस का एग्जांपल देख लो यार, उन्होंने जितना बिजनेस, जितनी मार्केटिंग उस टाइम पे करी है, आई डाउट पूरे वर्ल्ड में किसी ने करी होगी। मतलब करेक्ट। एक लाइक क्रिकेट वर्ल्ड कप तो छोड़ दो, फीफा वर्ल्ड कप तक पहुंचना, 192 कंट्रीज तक पहुंचना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। So yeah, start from the lower level, from like lower level as in keep start from the earliest days, your business mindset, and matlab just see the difference, and the difference will be there in the society, the difference will be there in the city, that particular state, that particular country. And if you really want to be a patriotic, if you really want to be a differentiator, start working on a particular change, and it can be anything. And then this is हो सकता है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज हो जाए, बट मेरे लिए whenever you're doing a change, make a business out of it. करेक्ट। Don't do it for free. There was a statement of Joker: if you're good at something, don't do it for free. If you're good at Yes. something, So make business. one more thing that happened, if you tell that it is free or cheap, people feel कि यार ये तो अच्छा नहीं होगा. That is again a mindset. With what happened with Tata Nano, it was labeled Yeah, as cheap. If it yeah, was labeled as affordable, then things would have been different. But that cheap absolutely. shop, so we in India, we when we read cheap, so that is embedded in our heads कि ये अच्छा वो तो नहीं है है. ही है, And totally. even if someone is giving for free, तो अच्छा free तो ले लिया, लेकिन इसमें तो पक्का कुछ गड़बड़. Nothing for क्यों free was भैया that ऐसा what क्यों we माइंडसेट रखना ही नहीं ना यार, फ्री। मैं तो कहता हूँ कि आप कोई बिजनेस बना रहे हो, उसको पहले 100 लोगों को फ्री में बेचो। ठीक है, एक फ्रीमियम बेस्ड मॉडल आता है, राइट? ये नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, इन सब लोगों ने पहले अपने सब्सक्रिप्शन फ्री में बेचा है। ओला, उबर, ये जब मार्केट में आई, इन लोगों ने फ्री में कैब्स राइड्स दिए, राइट? अगर किसी को याद हो, आज से 10 12 15 साल पहले इन लोगों ने फ्री में, आप फ्री में किसी को आदत लगा दो और फिर उनसे correct. पैसा लो। फ्रीमियम मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है। आपको पता चल जाएंगे, आपके यूजर्स यूजर्स फ्री में टेस्ट भी कर लेंगे आपका प्रोडक्ट, यूजर्स को पता भी चल जाएगा आपकी सबसे बड़ी सर्विसेज के बात बारे में। उसमें होगी स्टिकीनेस. फ्री में यूज एब्सोल्यूट, करके स्टिक हो जाएगा. एंड देन जो जियो ने स्ट्रेटेजी, सबसे बड़ी एग्जांपल, या या फ्री में दिया पहले, फिर उसके बाद अब इतना पैकेज बढ़ा दिया, लाइक इट इज कंट्रोलिंग द मार्केट. it is controlling the market, and that's how you should do it यार। और जियो was a big disruptor in the market यार। मतलब आज से 5 8 साल पहले, मतलब इट वाज टू डिफिकल्ट टू अफोर्ड अ 2 GB, मतलब एक नॉर्मल हाउस होल्ड के उस पे लेके जाए 2 GB प्लान लेने में होता था। आजकल तो यार 2 GB हम लोग मतलब अभी 1 घंटे के दिन दौड़ा पॉडकास्ट रहे. में शायद खत्म करके होंगे, उससे भी ज्यादा करेक्ट, करेक्ट. ही। सो या दैट्स हाउ इट इज। अच्छा, व्हाट यू विल से, अब हमने अर्ली स्टेज के बारे में तो बात की, बट एक उसमें आइडिया आ जाता है कि अब मेरे पास आइडिया तो आ गया. हम्म, मोस्ट पीपल हैव एन आइडिया. आइडिया सबके पास आ गया, माइंडसेट भी बन गया, बट वो उसको कभी एग्जीक्यूट नहीं करते. वो डरते हैं. डरते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, सोसाइटल प्रेशर, यार मैं बिजनेस करूंगा, लोग तो उसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अर्ली स्टेज फाउंडर्स के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, या या इवन आई हैव सीन पीपल हु स्टार्ट देयर बिजनेस इन 40s 50s, सो देयर इज नो वे.
बट वही होता है अमेजिंग, कि आइडिया को एग्जीक्यूट करना सबसे बड़ी चीज वही होती है. एवरीवन हैज एन अमेजिंग, आइडिया बट वेरी फ्यू एग्जीक्यूटेड. amazing question. Well, like kudos to you for putting this question. So, इसका भी again मैं कुछ examples ही बात करूँगा and real life examples, okay? So, when I was doing this Startup India Yatra project, I literally in मेघालय में I remember हमने टॉप 20 स्टार्टअप्स को हम लोग शिलोंग में हमने बुलाया, वहां पे कंडक्ट करा. IIM शिलोंग में थे हम लोग. टॉप 20 टॉप 25 स्टार्टअप्स जब आए, उनमें पता है एज ब्रैकेट क्या था. एक देयर वाज अ गर्ल who was like 15 or 16-year old, ठीक है, and there was a lady who was a professor at some other university and she was like 70. Okay, ओके. तो दोनों ने आइडिया दिया हुआ था एंड दोनों के एज के गैप में ही बहुत सारे इनोवेटर्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने अपने आइडियाज लाए होते. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देयर इज नो पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया कि आपने एक बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट करना है. आप 5 years के हो, 10 years के हो, 15 years के हो, till the time you are there in your life, 70, 80, start. पहली चीज. दूसरी चीज, whenever you're going to start, एक आजकल बहुत अच्छी चीज है हमारे पास विच इज लाइक एक्सेस टू वेब, एक्सेस टू इंटरनेट. सबके पास है. कुछ नहीं करना है, एक गूगल में उठा के ना आप सिर्फ इतना कर दो, स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाओ, रजिस्टर्ड मेंटोर कौन से हैं देखो और उनसे बात करना शुरू कर दो. लिंक्डइन पे जाओ, देखो आप जिस एरिया में हो कौन से लोग हैं आपके आसपास रहते हैं, उनसे बात करना शुरू कर दो अबाउट दी स्टार्टअप्स. चलो और कुछ मत करो. इफ यू आर लेट्स से अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, ठीक है, एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ. डू दिस. आपके पास एक आइडिया आया, आई अंडरस्टैंड, मे बी आपकी फैमिली इज कमिंग फ्रॉम अ प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब, राइट, ठीक है, आपके हो सकता है दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हो, वो आपको इनकरेज ना करे बिजनेस करने के लिए या जो भी है, लेकिन उनके पास ना जस्ट एक काम करना, आइडिया लेके जाना, अपना स्टार्टअप आइडिया, कि मेरे को ये प्रॉब्लम नजर आई है और मेरे को ये आइडिया इंप्लीमेंट करना है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आर पेरेंट्स, आर ग्रैंड पेरेंट्स, राइट, और दोनों के पास जाओ, पेरेंट्स के पास भी, ग्रैंड पेरेंट्स के पास भी, अपने फ्रेंड्स के पास भी, राइट, अपने से छोटे किसी बच्चे के पास भी, इट्स ओके, सबसे वो आइडिया वैलिडेट कराओ, राइट, बिकॉज दोज पीपल विल गिव यू द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म कि ये आइडिया क्यों नहीं चलेगा, और उससे आपको पता चल जाएगा कि यार ये आइडिया इज रियली गुड और नॉट, राइट. एंड why I'm saying go to your grandparents and then go to a kid particularly, because grandparents के जो experience होगा प्लस जो एक बच्चे का माइंडसेट होगा कि यार इसको कैसे जल्दी इंप्लीमेंट करना है, राइट, इनोवेशन करना है, उन दोनों का मैच करके आप अपना बेस्ट आइडिया बना सकते हैं, राइट. बहुत एक मतलब इसी में अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, राइट, अगर मान लो मेरे को, मैं ट्रैफिक में फंसा हूं किसी, राइट, एक मैं अगर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास जाओ, एक ग्रैंड पेरेंट के पास जाओ, उनसे मैंने बात करी कि इस ट्रैफिक को कैसे इग्नोर करा जाए, वो बोलेंगे यार 50 साल पहले तो इतने व्हीकल्स वगैरह नहीं होते थे, वी यूज्ड टू वॉक, राइट, सो वॉक करके जाओ. यही मैं एक 6 ईयर के या 10 ईयर के बच्चे से पूछूं कि यार ये ट्रैफिक को कैसे इग्नोर करा जाए, वो एक बहुत लेम आंसर देगा, उड़ के चले जाओ, उड़ के चले जाओ. अब नाउ वी हैव टू आंसर्स, राइट. एक किसी ने बोला कि पैदल जाओ, एक किसी ने बोला उड़ के जाओ. Can we mix both the things? Can we mix both the things? And that mixture will be your innovation. इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल, हम सब ने आयरन मैन के बारे में सुना है, सब ने आयरन मैन का सूट सुना है, राइट. डू यू नो दैट दैट सूट इज एक्चुअली गेटिंग बिल्ट बाय अ स्टार्टअप इन यूके एंड इट इज एक्चुअली ऑफ $100,000, वाओ. right? And this is an innovation, this is how you think innovatively. कि आपने सोचा यार ये एक प्रॉब्लम है, इसको मेरे को सॉल्व करना है. आपने 2 डिफरेंट जनरेशन से बात करी, 3 डिफरेंट जनरेशन से बात करी, उनका आइडिया सुना, उनको मिक्स करा और आपका आइडिया बन गया. नाउ यू वैलिडेट दैट आइडिया, यू गो टू योर, उन्हीं के पास वापस जाओ, राइट, टॉक टू देम कि मैंने ये ना सूट, चलने वाला सूट करा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज्यादा चलने में भी, ठीक है. उसी के पास 6 ईयर 10 ईयर ओल्ड बच्चे के पास जाओ, बोलो यार मैं उड़ भी सकता हूँ, राइट, मैं उड़ने वाला एक चीज बना रहा हूँ. मतलब आई नो दिस साउंड्स वेरी फैसिनेटिंग, या सुनने में अच्छा लग रहा है, इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स और फेस करेंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ यू कैन थिंक एन आइडिया and how you can get validation from your local people, right? That is very much important. So coming to back to your question is,
इसके जो मैं डॉट्स कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक आइडिया है, आप वैलिडेट करो अपने ही लोगों के साथ, अपने ही सोसाइटी के साथ, अपने ही रीजन के साथ, बिकॉज दैट्स फर्स्ट। इफ दोज पीपल आर रेडी टू बाय योर सोल्यूशंस ना, आगे आपको इजीली वो कहते हैं ना, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू मार्केटिंग मिल जाएगी कि यार वाओ, यू नो दिस गाय इज डूइंग दिस जॉब, दिस गाय इज डूइंग दिस जॉब। सो अनमोल, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, मतलब आप कमिंग फ्रॉम उत्तराखंड, फ्रॉम देहरादून, राइट, आपने हो सकता है आपने अपने स्टार्टअप को मार्केट आउट ऐसे करना शुरू हो कि इंटरनेशनल लोग पूछे, यूएस से आपके पास मार्केटिंग के लिए लोग आए, वैसे हैं। बट देहरादून में आपको ऑलरेडी कुछ लोग जानते होंगे और वो आपको ऐसे ही फ्री फंड में ऑर्गेनिक लीड्स दे रहे होंगे, राइट? करेक्ट। सो वो क्यों दे रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कि ओके, देयर इज एन इनोवेटर, देयर इज एन डिसरप्टर, देयर इज एन एंटरप्रेन्योर सिटिंग इन आवर एरिया, कि अगर किसी ने बोल दिया कि यार मार्केटिंग करनी है, हो सकता है उनके बजट इश्यूज हो, वो कह रहे हो यार मेरे पास सिर्फ 10,000 है पर मंथ देने को मार्केटिंग को, अनमोल कैन यू डू दैट? आप कहोगे यार आई कैन डू दैट, राइट? आप अप्रोच तो करो। बस ये कि अनमोल के बारे में पढ़ा, राइट, द यंग टर्क्स के बारे में पढ़ा, आपकी कंपनी के बारे में पढ़ा, उन्होंने सोचा यार इसके पास तो बड़े बड़े क्लाइंट्स आ रहे हैं यूएस के, तो ये शायद मेरी मार्केटिंग क्यों करेगा? बट उनको क्या पता कि अनमोल विल बी मोर हैप्पी टू डू मार्केटिंग फॉर देम बिकॉज वो लोकल पीपल है, राइट? करेक्ट। तो या दैट हैपेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग लोकल लोगों से बात करें, वो हेजिडेंस हटाएं जो हमारे मन में है कि हम यार ये चीज शायद लोग मानेंगे नहीं, करेंगे नहीं। एंड इसका एक और मैं बहुत सिंपल सा चीज बोलूंगा, आफ्टर डूइंग द लोकल नेटवर्किंग, आप ये सोचोगे बहुत सारे लोग ये चीज कर रहे हैं, राइट? आप में क्या यूनिकनेस है यार? डोंट थिंक अबाउट द यूनिकनेस, डोंट थिंक अबाउट द यूनिकनेस। स्विगी जोमेटो सेम ही तो है। करेक्ट। अगर आप देखो, स्विगी जोमेटो सेम है, ओला उबर सेम है, बट वो दोनों चल रहे हैं ना, क्योंकि यूनिकनेस विल नॉट come in the idea, but uniqueness will come in the procedures, right? Uniqueness will come in the process, because आपका mindset, आपके टीम का mindset will be different than the person who is running the similar kind of business, the similar kind of things, but आप दोनों के प्रोसेस अलग होंगे। सो आप कभी भी ये मत सोचो कि यार मेरा कॉम्पिटिटर तो ये कर रहा है, मेरा ठीक है, अपने कॉम्पिटिशन के बारे में जानना इज इंपॉर्टेंट, बट कभी ये मत सोचो कि यार वो इतना अच्छा कर रहा है, मैं उस लाइन में घुस ही नहीं सकता। बहुत सिंपल एग्जांपल अगेन मैं इसका दूं, आपके दिमाग में आया कि यार आज मैंने एक स्वीट शॉप खोलनी, राइट, देहरादून में। आप कहोगे यार, आपने अपने पेरेंट्स से ही बात करी, वो कहेंगे यार बहुत सारी स्वीट शॉप है, वो पहले आपको डिस्करेज कर देंगे, तेरी स्वीट शॉप में ऐसा क्या है? अरे पहले सोचो कि आपके स्वीट शॉप में क्या चीज हो सकती है। आप बोलो यार मैं ऐसा एक्सपीरियंस दूंगा, या मैं, लोग आएंगे मैं उनको फ्री में कुछ स्वीट्स खिलाऊंगा, या मैं एक इंग्रेडिएंट, एक अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट अलग से रखूंगा, उस जोन का एक्सपीरियंस अलग बनाओ, कुछ भी ऐसा, राइट? आप कुछ अपना ब्रेन लगाओगे ना, वो चीज चलेगी। और उसको वैसे ही मार्केट आउट करो लोकली। देहरादून में फैला दो कि एक स्वीट शॉप खुल रही है जिसमें फ्री में फर्स्ट फ्री 100 कस्टमर्स को हम लोग, लेट्स से लाइक 500 ग्राम्स का हम लोग फ्री में उनको ये एक स्वीट बांट रहे। 100 लोग तो वैसे ही आ गए यार आपकी दुकान में, फ्री में करेक्ट। खाने ही आ जाएंगे। और 100 में से 10 लोग भी अगर कुछ खरीद गए साथ में, आपके 10 बायर्स ऑलरेडी आ गए। सो दिस इज हाउ यू नीड टू मार्केट आउट, राइट? एंड दिस इज हाउ कि आप मत सोचो कि कैसे मेरे को स्टार्टअप स्टार्ट करना है, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है। बस शुरुआत कर दो, आप डरो मत, और अपने ही लोगों से क्रिटिसिज्म लो, उनकी क्रिटिसिज्म लो, एक और आइडिया बनाओ और उनके पास वापस जाओ कि यार मैंने इस चीज का सोल्यूशन लिया है, नाउ यू टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम। Because your family members, your local people would be your biggest criticism, but they will be your biggest customers ultimately. करेक्ट। मेक्स That अ is लॉट ऑफ। very important. इसमें अभी आपने एक बात बोली स्टार्टअप उत्तराखंड और उत्तराखंड की पॉलिसीज के बारे में, सो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक टॉपिक हो जाता है दैट आई वुड लाइक यू टू टच बेस ऑन दिस बिकॉज मेनी Sure, पीपल हु आर वाचिंग दिस एपिसोड वोंट बी अवेयर ऑन दिस कि sure. स्टार्टअप उत्तराखंड की अभी क्या कुछ पॉलिसीज, लाइक जस्ट अ जिस्ट ऑफ इट, नॉट वेरी डिटेल, Yeah, we'll put absolutely. out the relevant links, people can visit and read in detail, but Yeah, एक आइडिया देने के लिए कुछ तो आपने बता दिया कि गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रही है, बट लाइक व्हाई नॉट वी yeah. डू अ बिट ऑफ। We'll tell in detail. So, to all the people who are there locally in Uttarakhand, एक website है startuputtarakhand.uk.gov.in. Go there, sign up, पिच योर आइडिया। उसमें एक आइडिया होगा, आपको अपना आइडिया बताना है, आपको अपना
पिच डेक क्रिएट करनी है। पिच डेक क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको एक पोर्टल मिलेगा, जैसे हम लोग फेसबुक वगैरह पे लॉगिन करते हैं, वैसे यहाँ पे भी लॉगिन करना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, अपने आइडिया की प्रोफाइल वगैरह बनानी है, राइट। अपना उसमें रजिस्टर कराना है, ठीक है। रजिस्टर कराने के बाद क्या होगा, आपको गवर्नमेंट, जहाँ पे भी आप लोकली सिचुएटेड होंगे, वहाँ से आपको गवर्नमेंट आपको बुलाएगी। आप आपको बोलेगी कि आप अपना आइडिया पिच इन करो, राइट। अगर उनको आपका आइडिया अच्छा लग गया, सो आइडिया के ऑब्वियसली फ्यू क्राइटेरियाज होंगे कि आप डिसरप्ट कर रहे हो मार्केट में। जैसे स्टार्टअप उत्तराखंड में आप मार्केट में कुछ बहुत इनोवेशन ले आए हो, क्लाइमेट चेंज की ओर आप काम कर रहे हो, राइट। आप कुछ अवेयरनेस फैला रहे हो, क्योंकि वहां पे कुछ चीजें हैं जो कि लोकली गवर्नमेंट वांट्स, राइट। अगर आपको लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है तो दे वांट कि हाँ सर्टन चेंजेस हो, राइट। तो अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट इन होते हो, आप एक अच्छा बिजनेस प्लान उनको देते हो, अपने स्टार्टअप को अच्छे से पिच कर सकते हो उनके सामने, व्हाट दे विल डू इज कि आपको वो अपने रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स में मेंशन कर देंगी, एंड सब कुछ आपके पोर्टल पे आपको नजर आ जाएगा। आपको भेजेगी एक इनक्यूबेटर में। अब जस्ट टेलिंग द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम द स्टार्टअप इकोसिस्टम, एक इंक्यूबेटर टर्मिनोलॉजी इज कमिंग फ्रॉम द मेडिकल सेंटर, राइट। इंक्यूबेटर क्या होता है कि जहाँ पे एक बच्चा होता है जो प्री मेच्योर होता है या प्रॉपरली ग्रो नहीं होता है, उसको एक इंक्यूबेटर में रखा जाता है, जहाँ पे बोलते हैं कि उसको प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाती है कि वो प्रॉपरली ग्रो हो सके, नर्चर हो सके। वैसे ही इन स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स होते हैं, जो कि मोस्टली कॉलेजेस में आपको मिल जाएंगे, मोस्टली कोई कॉर्पोरेट्स वो इंक्यूबेशन सेंटर्स बना देते हैं। तो लोकली आई थिंक सो देर आर 15 ऑड इंक्यूबेशन सेंटर्स इन उत्तराखंड, राइट। आप किसी उनकी वेबसाइट में जा सकते हो कौन से इंक्यूबेटर्स हैं। उनमें उनमें से उन 15 इंक्यूबेटर्स में से गवर्नमेंट आपको किसी एक इंक्यूबेटर में भेज देगी, जो कि उनको लगेगा कि हाँ ये इनोवेशन में या क्लाइमेट चेंज में या किसी में आप हेल्प कर रहे हो, तो वहां पे वो लोग सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगे। वहां के मेंटर्स, वहां के इकोसिस्टम आपको हेल्प कर सकेंगे, एंड आप उस जगह में जा सकते हो। उस इंक्यूबेटर में आपको फ्री में सीटिंग मिल जाएगी, आप वहां पे जाके जब मर्जी बैठ के उधर काम कर सकते हो। को वर्किंग स्पेसेस मिल जाएंगे आपको, राइट। एंड एज आई सेड, आपको उसमें फंड्स वगैरह की हेल्प मिलना शुरू कर देंगे। सो द process is very simple. Go onto this website, mention about your idea, mention your business plan, put your pitch deck, right, and they will work. ये मत सोचना गवर्नमेंट नहीं वर्क करेगी, गवर्नमेंट वर्क करेगी। उनके ऊपर प्रेशर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि हमारे को हर साल इतने स्टार्टअप्स चाहिए, राइट। अगर वो स्टार्टअप्स नहीं आते तो इसमें किसी गवर्नमेंट की गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती है कि हमारे को पता होते हुए हम लोग अप्लाई नहीं करते। सो स्टार्ट अप्लाइंग। हाँ, वहां पे प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम है, इनके इनफैक्ट ग्रीवियंस पोर्टल भी होता है, आप ग्रीवियंसेस भी डाल सकते हो। एंड like these people actually take request very seriously. So start pitching in your startups. So as I said, you can go to Startup Uttarakhand website, right, put your business plan, and आपको प्रोसेस पता चलता रहेगा। कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, आई एम वन ऑफ द रजिस्टर्ड मेंटर्स एंड स्टार्टअप उत्तराखंड, राइट। रीच आउट टू मी, आई विल हेल्प यू विद दैट। ईमेल भी है एक स्टार्टअप उत्तराखंड की, startup celluk@gmail.com. You can just go ahead and send out your We'll query put on this that mail particular email. down in the description for Yeah, people can right. want to it. And there is a number as well, you can just call them. It operates from 10 a.m. to 5 p.m., right. You can just reach out to them and talk to them, यार मतलब आपको कोई भी problem है, and people will be very open to welcome you as a startup over there. So It's even just in that this, you I will say personally, जब मैंने भी register किया था, तो they were very open in that term. yeah, yeah, Because due to the nature of our business, we didn't qualify for the yeah, certification. But for most startups who are starting, they should at least try once. एटलीस्ट वहाँ absolutely, पे कनेक्ट तो absolutely, बनता है, बिकॉज लाइक absolutely. वहां से मेरे को कई कॉमन कनेक्ट्स मिल गए, उन्होंने मेरे को कुछ और इवेंट बता दिया, सो Yeah, दैट्स हाउ यू नो थिंग्स विल फंक्शन. So you should absolutely. at least apply it for it once. And now they have even sent back an email to me that to reapply for it, because Yeah, I don't know if something might have changed, so they have asked me for it. So that is there, I think, and their follow up is strong. To our audience, their follow up is strong. I think they have been following up with me for a month to register, and they have given me something last date to register for it. So I'm telling it openly that this is there. Government is putting in effort. It's you who have to take the initiative first. absolutely, absolutely. So that is there. So now one thing that I want to touch base with you.
with the startup ecosystem, we discuss one thing, that you are working on a vision to take the failure rate of that only 2% of the startups are able to survive. Yeah. Most get closed down. So you are taking that rate to and like that's the vision, from Yeah. That's the 2% vision. to at least 10-20%. So Yeah. how you are going to be doing that? What are the initiatives government is taking to help you do that, as you are the mentor, so things start Yeah. with you as well? And then what is the way ahead on this? Because this is something I think the most important for entrepreneurs who are watching right now. As we all know, business is tough. Even we all have been there, where we thought that अब तो मेरा business गया, नहीं हो पाएगा, or whatever it is. It happens with all of us. Absolutely. So Absolutely. you know Sure. about that. So Anmol, what I would suggest personally, first coming to that, right? I openly say that I connect with the wannapreneurs who want to start a startup. I Right. connect with the entrepreneurs. I don't charge anyone until unless I see, okay, they are getting some traction, they are getting some business, right? Correct. और probably okay, अगर मेरे को कोई चार्ज भी करना होगा, मैं उनसे सिर्फ लाइक जैसे मैंने उनको बोल दिया कि ओके इफ यू वांट टू गिव इट टू मी, एक वो कहता है ना गुरु दक्षिणा, तुम दे दो 500 रुपए पर घंटे के हिसाब से, 200 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू रियलाइज कि दे आर पुटिंग सम मनी इनटू इट. अगर बिल्कुल फ्री में करेंगे ना, वही वाली माइंडसेट हो जाएगी, यार फ्री में कर रहे हैं, छोड़ो यार, इसमें मेरा भी टाइम खराब हो रहा है, आपका भी टाइम खराब हो आपका भी होगा। रहा है. Whatever you have money, put that into the conversation between you and me, right? We will start exploring, we will start discussing the things, right? मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है, I will give whole experience to you, right? And I promise, give me 1 year of your time, be dedicated with me. मैं एक चीज आपको प्रॉमिस करता हूँ, एंड ये मैंने अपने सारे जितने आज तक के स्टार्टअप्स को मैंने मेंटोर करा है, उनसे बात करी है, मैंने एक जो मेरे साथ चले हैं एंड तक, या मैंने खुद के बिजनेसेस भी, मैंने एक चीज मेक श्योर करी है कि किसी के पास एक आइडिया है ना, उस आइडिया को रजिस्टर्ड करवा के ट्रैक्शन स्टेज में लाना, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई प्रॉमिस आई वोंट रन अवे. ओके. Hmm. एंड But the आई एम नॉट, commitment goes for the founders and दैट first. कमिटमेंट, दैट पैशन शुड बी फ्रॉम योर साइड. Yeah. अगर वो आपके नहीं है तो दिमाग कोई फायदा नहीं है. Like Akarshan won't be आपके helping you then. दिमाग में कुछ भी आइडिया है, कोई भी कैसा भी आइडिया, आई एम ओपन टू लिसन टू इट, रीच आउट टू मी. फर्स्ट 5 calls I'll give you free. Okay, first 5 calls, 5 hours of my time I'm giving completely free, whereas I charge a lot. Okay, I charge to the people out there a lot, लेकिन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट है. कोई भी मेरे पास द यंग टर्क डायलॉग्स के पॉडकास्ट से आ रहा है, आई एम गिविंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? रीच Wow, आउट टू that मी. means a lot for our audience. We will put this, in a big way, and we'll Yeah, market it well for the entrepreneurs there in Uttarakhand. And I know absolutely. a few people who actually need your help. They are Yeah. not able to register, and they are from very remote areas like Bhimtal and above. So Absolutely. I'll be more than happy. I'll be glad to assist free of cost for 5 hours to everyone who is viewing this, particular podcast. After 5 hours, yes, definitely I'll charge because time is money. It's yeah, important for me. Akarshan It's is also important for you. investing his valuable time, so you Absolutely. need to respect that. Absolutely. Even And मैं those ये नहीं 5 hours, बोलूँगा आपको. guys, that he is Yeah, giving to you are valuable, and you should make the best out of them, so that your future associations you can spend without any absolutely. jijak. So Bina my jijak. whole ecosystem, I know, like probably if you go to any state, any city, वहाँ के जो टॉप, मैं ये नहीं बोल रहा टॉप entrepreneurs, but at least the top stakeholders, right? Whether it's from the government, whether it's from the incubation centers, they would know me directly or indirectly. Okay, they would know my name. तो I promise you, मैं आप लोगों को उधर तक कैसे ना कैसे पहुंचा दूंगा. बट आपको सिर्फ मेरे साथ डिस्कशन करते रहना है. आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यू जस्ट ट्रीट मी. एक वो कहते हैं ना, एक जिम जाते हो और कहते हो कि यार एक पर्सनल ट्रेनर मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इम्पोर्टेंट है. तो पर्सनल ट्रेनर आपको मिल गया, आप ये समझो, आपको मैं हेल्प कर दूंगा लैडर क्लाइंब करने में. क्लाइंब करके डेस्टिनेशन तक जाना, इट्स योर कॉल. आपको लैडर पे चढ़ाना, इट्स माय जॉब. ओके, एंड आई विल हेल्प यू विद दैट. सो फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रादर दैन यू कंप्लेनिंग ऑन ट्विटर, लिंक्डइन, मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन पे कि सर मुझे ये जॉब दे दो, सर मुझे इस जॉब में हेल्प कर दो, मुझे इस जॉब में रिकमेंडेशन दे दो, आपके पास कोई जॉब्स है. मेरे को वो चीज पे जाना ही नहीं. आई डोंट वांट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट इन द यंग माइंड्स. आई वांट यू टू हैव, यू से कि सर
Yeah, Akarshan, I have jobs. Do you have anybody who can, work with me? Right? I want you to become a job creator. That's very important, and that's what I've been vocally saying for the last 8 to 10 years, that become a job creator. Okay, it's okay, I understand, if even if you don't have a job creator, not a job creator, go into that particular jobs where your passion leads in. Again, udhar bhi I can help you with that. Coming from the corporate world, being in the job sector, I can help you with that. But again, if those things are, if you are passionate about it, if you are interested to work in that particular culture, बिकॉज मेरी रेपुटेशन, अगर मैं आपको कहीं पर रेफर कर रहा हूँ, मेरी रेपुटेशन भी स्टेक पे होती है, करेक्ट, राइट? कल को मेक्स वो लोग सेंस, मेरे या को रीच आउट कर सकते हैं कि आकर्षण, आपने मेरे को एक रेफरेंस तो दे दिया यार, बट ही इज नॉट वर्किंग वेल, राइट? या उसने यार वो इंटरव्यू में आया और उसने पता नहीं क्या 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 बोल के चला गया। आई एम सॉरी यार, फिर मैं कभी ऐसे किसी का, इफ यू आर ट्रस्टिंग मी विद थिंग्स, आई एम ट्रस्टिंग यू विद थिंग्स एज वेल, right? So it's very important for you to become a dedicated person. You want jobs, I can help you with jobs. If you want to become a startup, I can help you become a startup. But मेरे पे वो तब आना आप मेरे पास जब आप सिंसियर होगे, सिंसियरली वर्क करोगे। एंड आई प्रॉमिस यू, आपको मैं कहीं ना कहीं लेके जाऊंगा। दिस इज माय प्रॉमिस, एंड आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बिकॉज a lot of people have worked very closely with me, and I've seen their results, right? So, and I'm not saying that I'm one of the experts, I'm the best experts. No, there are a lot of people better than me. But it's just that मेरे को बीइंग इन द इकोसिस्टम, मेरे को कुछ चीजें, वो नॉर्म्स पता चल गई कि यार अगर हम लोग सिंसियरली इन नॉर्म्स को, इन रूल्स को फॉलो करेंगे ना, वी कैन रीच आउट देयर। सो आई एम देयर टू हेल्प यू, आई एम देयर टू गाइड यू, आई एम देयर टू असिस्ट यू। जस्ट रीच आउट टू मी, right? Or reach out to people like me who are a part of the ecosystem. Reach out to the corporate world, right? आपको जॉब चाहिए, सिर्फ naukri.com में रेज्यूमे अपडेट करने से आपको नहीं, जॉब नहीं मिलेगी। लिंक्डइन पे जाओ, राइट? अपने सोशल मीडिया का यूज करो, टॉक टू द पीपल, नेटवर्क विद देम, राइट? टॉक टू योर लोकल इकोसिस्टम, इवेंट्स पे जाना शुरू करो। हर दिन एक इवेंट आपकी सिटी में कोई ना कोई हो रहा होगा बिजनेस से रिलेटेड। क्या आप जा रहे हो उसमें? क्या आप नेटवर्क बना रहे हो? एंड आई पर्सनली फील योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्क। जितना बड़ा आपका नेटवर्क है, उतने आपकी जेब में पैसा आज नहीं तो कल बच जाएगा, right? So this is very important for me as an individual ki I'm going to help you, right? So at the ground level, I'm helping a lot of startups, right, reaching their destination, specifically at the first stage, I would say, from their idea implementation to the traction stage. So that's me. On individual level. On the government level, government are there spreading about their awareness programs. Government, every government, whether it's a state government, whether it's the national government, the Startup India team, everyone is helping each and every person who has an idea or who particularly wants to be a change maker in the ecosystem. It's just that you as an individual, again, start searching the web, right? Web में memes से अच्छा, आप ट्रेंडिंग मीम्स से अच्छा, आप बेटर है वेब में जाके आप ये सर्च करो कि ओके, हाउ कैन आई बिकम a startup, right? इवन What are इफ the यू सी local? आकर्षण, इंस्टाग्राम इज अ वेरी गुड टूल फॉर इंफॉर्मेशन, बट वो ऐप पे डिपेंड करता है, उस पे देखते क्या हो। आप देखते क्या हो? आपकी पूरी फीड यार, आपकी, मेरे को आज कोई इंस्टाग्राम, अपना इंस्टाग्राम ओपन करके दे दे, मैं उसकी फीड से बता सकता हूँ कि भैया आपको क्या चीज में इंटरेस्ट है। करेक्ट, आपकी फीड आपके बारे में बता देगी, आपके पर्सनालिटी के बारे में बता देगी। सो दैट्स करेक्ट। लाइक हाउ इट गोज। कोई कोई फीड में आपके फूड नजर आ रहा है तो पता चल जाए भाई तू खाने वाला आदमी है, तू पूरा दिन you are खाना into that है। particular thing, right? So it's okay. करेक्ट। And even if you are into food, it's not bad यार। फूड ब्लॉगिंग करना शुरू कर दो ना यार, कौन मना कर रहा है आपको? अब तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं, एवरीवेयर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, इंटरनेट ने एवरीवेयर, हमें इतनी पावर दे दी है। आप एब्सोल्युटली फूड यार, ब्लॉगिंग एब्सोल्युटली। करो, आप जाओ बाइक पे घूमो, एवरीथिंग, एनीथिंग, Anything, एनीथिंग गिव्स यू। and it's वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब it's just about you moving your ass from that lazy couch and start doing things. It's just that, एंड it's ये जो nothing। टूल है सबके हाथ में, इसमें बहुत पावर है, इसको बहुत गलत कामों पावर के लिए यूज मत करो, इसको काम पे है, लगाओ एक्चुअल में। काम पे लगा दो। एंड या लाइक, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, वो 2% टू 10-20% इट्स इन आवर हैंड्स यार। करेक्ट। मतलब जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, मतलब चाहे वो एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हो, हमारे जैसे स्टार्टअप्स हो जिन्होंने स्टार्टअप करे,
हमने लर्न करा अपने एक्सपीरियंसेस से, हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, हम लोग एक स्टार्टअप में जॉब कर रहे हैं, इकोसिस्टम प्लेयर है, गवर्नमेंट के साथ वर्क कर रहे हैं, ये हम सब लोगों के हाथ में, एक एक पर्सन, एक इंडिविजुअल लेवल के हाथ में नहीं है, राइट? Simple है, we are there to support a startup. It's just that the startup should be passionate, should be interested, and should have patience. ये थ्री क्राइटेरियाज एंड दैट्स अबाउट इट. और इसका थ्री क्राइटेरियाज का एक लाइफ सर्कल मैं आप लोगों को सबको बोलना चाहूंगा, जिसके भी दिमाग में एक आइडिया आता है, प्लीज डू दिस थिंग बिफोर यू आर टॉकिंग टू एनीवन. पहले थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम, कि आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है आसपास. आपको, आप कहते हो ना यार कभी बिजनेस समझ में नहीं आता कि क्या करना है, आइडिया ही नहीं पता क्या होता है, कैसे आइडिया आएगा. बहुत सिंपल है, आप पहले देखो आसपास की प्रॉब्लम क्या है, राइट? उस प्रॉब्लम को एक बारी वैलिडेट कर रो और लोगों से, कि क्या वो वही प्रॉब्लम इज बीइंग फेस्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? वो प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन हो गई, प्रॉब्लम की वैलिडेशन हो गई. गो टू द थर्ड स्टेप. नाउ यू ब्रेनस्टॉर्म, थिंक अबाउट एन आइडिया. जैसा मैंने पहले भी बोला, टॉक अबाउट दैट आइडिया टू एनीवन. कोई भी एज में हो, एक 5 साल के बच्चे से एक 70 years के मेच्योर्ड पर्सन से, सबसे पूछो उस आइडिया के बारे में कि यार ये मेरा आइडिया आपको कैसा लग रहा है, क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. प्रॉपर आइडिया आइडेंटिफिकेशन लो, आइडिया वैलिडेशन कर लो अपना प्रॉपर. जैसे ही ये 4 steps कर लोगे, फिफ्थ स्टेप इज सिंपल. गो अहेड, आपको पता चल गया आपका आइडिया लोगों ने वैलिडेट कर दिया लोकली. गो अहेड, रजिस्टर्ड योर कंपनी यार. गो अहेड, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर आइडिया. रजिस्टर ना भी करो कंपनी का, इट्स ओके. आई नो उसमें भी पहले 5 स्टार्ट 10 कर। 20 हजार रुपए लग जाएंगे. ना करो, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट आइडिया. एक बिजनेस प्लान बना लो, ठीक है, सिंपल एक पिच डेक बना लो, एक बिजनेस प्लान बना लो. Go to websites like Startup Uttarakhand, Startup Himachal, right, and start putting your idea into that portal. And फिर let the universe do the job for you. Let the people, let the ecosystem players do the job for you. उनको समझ में आया आपका आइडिया, वेल एंड गुड. नहीं समझ में आया, इट्स ओके, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है. उनको नहीं समझ में आया ना, स्टार्ट पिचिंग योर आइडिया टू अदर पीपल आउट देयर, अदर टाउन्स, अदर इकोसिस्टम प्लेयर्स. एंड अगर आपको लगता है ये आइडिया चलेगा, जस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑन योर आइडिया, इट विल वर्क समडे और द अदर. ठीक है. सो दैट्स लाइक व्हाट आई कैन से. वेरी एंड वो ऑप्टिमिस्ट। 2% का 20% हम लोग लेके आ जाएंगे चेंज, अगर आप लोग, सिंपल है, पेशेंस रखोगे, वैलिडेशन करोगे अपने आइडिया को, राइट, और हसल हार्ड करते रहोगे. जस्ट कीप हसलिंग, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड ऑन योर लाइक आइडिया. You will get it. You will reach the destination. Perfect. I think we have covered it all, and it makes a lot of sense. What on the last note, what you said, from the journey to bring that 22% to 20%. Yeah. So adding that zero is not gonna be easy, but yeah, I think you have given a model to Yes. everyone how they can work on it, and consistency. Yes, I think our team should highlight this in a big way. So I think that is something that we all need to make sure what we are doing, we are being consistent with it, because I have seen people, even with our case. So first year it was no traction, second year we got a bit of traction, third year we got good traction, fourth year it is massive traction. Yep. Now it is Yes. like we are automatically generating lead, businesses automatically happen most of the time. I'm in meetings or at events somewhere, so it And by takes a 10 time. years, I'll see Anmol as one of the best entrepreneurs of the country. I hope so, that happens soon. Yes, that Working should. on it every day. I hope so. And that Absolutely. that is where we started this podcast as well. Me Yeah. and my partner, we were sitting in Bangalore having a discussion about the things, and in Bangalore, someone told us, "Why not you start a podcast on this?" Yeah. Then 3 months down the line, we thought we should bring this online. So that's how we and I, you and I, we have And met so today. you It have started with completed like 60 episodes, right? I yeah. think This so. is our episode number 64 that we have done. Wow. Wow. So 64 episodes. And Yeah, every Sunday one episode. every viewer, guys, go watch out those 64 episodes of this podcast, yeah. मतलब Anmol and his team is doing amazing job. तुम लोग जाके देखो, you will learn so much. And 64 episodes में से कुछ भी एक दो आइडिया, जो भी mentors, जो भी लोग आए from the ecosystem, उनके experiences से कुछ भी उठा के, just start यार. Don't think, overthink करो ही मत. Start working out कहीं there. कुछ start तो मत करो, सोचो, कहीं just से तो start. शुरू करो. Just start and you will get it. You will reach. Man, just start. बस intention अपने साफ रखो, कंसिस्टेंसी रखो, सिंसियरिटी रखो,
And as I always say, just work towards your passion. You will reach your destination. Correct. Well, perfect. First of all, thank you so much, Akarshan. We have already done 1 hour plus on this Yeah, episode, and it means a lot that you have given us so much time and given so much value to our audience. Secondly, thanks to our audience for watching this episode till here. You already know what Akarshan has mentioned. We will put those links in the description. You can connect to him. You are a startup founder struggling, connect to him. He will help you out. He is there to help you out. So do absolutely. not hesitate. We have already talked about these things. I won't repeat them again. Akarshan has explained. I think he has explained in very simple and detailed manner. Nothing can be far simpler than this. So Absolutely. Thank you so much, thank you Anmol. so much, And Akarshan, and thank you so much, audience. Please do like, subscribe, and comment your thoughts down in the down in the comment section. Do check out the description for everything, and we will be back soon with another episode. And Akarshan, thank you once again. thank you so much, Anmol. All the best to you and your team. Thank you.